In last class, we have completed long transmission line. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन तक हम लोग खत्म कर चुके थे। ठीक, मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ने के बाद आवर नेक्स्ट चैप्टर इज लोड फ्लो एनालिसिस। लोड फ्लो एनालिसिस इससे पहले कभी ऑनलाइन या अरुणाचल की क्लास में नहीं हुआ है। ठीक, ये पहली बार होगा। कंप्लीट पावर सिस्टम का हम लोग सबसे जो है कह सकते हैं कि सबसे लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, इसको हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, इसको करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको अवेयरनेस दे दूं। ये आसान नहीं है, लेंदी न्यूमेरिकल होते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं। एक क्वेश्चन में आधा घंटा 1 घंटा लगता है। ठीक, तो जिस लिमिट तक हम जा सकते हैं वहां तक हम जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में एक ब्रिज है। ठीक, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, and then we have general network constants, and then we have control of voltage and reactive power। इन 3 चीजों को मैं समराइज करूंगा। कुछ चीजें रिपीट होंगी, इसलिए रिपीट होंगी क्योंकि आपको वो याद हो जाएं। ठीक, तो इन तीनों को करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे लोड फ्लो पे और अपना सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट शुरू करेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड देन इट्स ओवर। इसके बाद स्विच गियर प्रोटेक्शन में सिलेक्टेड चीजें हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में आपका हो जाएगा। ठीक, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ पहला टॉपिक। इस कहानी को फॉलो करिएगा। हम हैं क्या, कहाँ पे हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, इसी तरह चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, तो ज्यादा कुछ शॉर्ट और मीडियम में जानने के लिए है नहीं, सीधा सीधा सर्किट है, केसीएल केवीएल से सॉल्व हो जाता है, तो बहुत ज्यादा वहां पे भी जानने की जरूरत नहीं है। वी आर कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की प्रॉपर्टीज में आए तो पहला पॉइंट, वोल्टेज एंड करंट is a function of distance। हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि distance is calculated from receiving end। That means VR is the reference। Now, the equations are, इक्वेशन कौन कौन से हैं? V is equal to what? VR plus नीचे कीजिए IR ZC by 2 into e to the power gamma x plus VR minus IR ZC by 2 e to the power minus gamma x। प्लीज थोड़ा बेटा माइक कंट्रोल कर लीजिए। सर। सेकंड सेंटेंस 1 मिनट।
तो बाद में वापस देखना ही पड़ेगा तो ओके, थोड़ा सा चलिए सेकेंड स्टेटमेंट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। व्हाट वाज करंट इक्वेशन? एंड करंट इज इक्वल टू आई आर, या जेड सी कॉमन ले लें, 1/ZC आई आर प्लस या वी आर प्लस आई आर ZC e to the power gamma x minus वी आर minus आई आर ZC, राइट, e to the power minus gamma x। इक्वेशन देखिए तो, इज इट करेक्ट? तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हैं? द कोएफिशिएंट विथ e to the power gamma x is incident voltage or current, and the coefficient with e to the power minus gamma x is reflected voltage or current। बोल सकते हैं क्या? Now next point, where ZC is what? Under root Z upon Y is known as characteristic impedance, और अगर आप YC निकालना चाहें, it will be under root Y upon Z, that is 1/ZC। We can call it characteristic admittance। इसको characteristic impedance कह रहे हैं तो इसको characteristic admittance कह सकते हैं। And what is gamma? Is under root Z into Y. Its unit is meter inverse, right? And is known as propagation constant. Also, gamma can be written as alpha plus j beta। लिख सकते हैं क्या? Where alpha is known as attenuation constant and beta is known as phase constant। Now, using यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, above properties, the wavelength and velocity of propagation can be known। ये वेव है क्या, किस वेलोसिटी से चल रहा है, इसको भी आप निकाल सकते हैं। अब अगर ये सीक्वेंस है, यूनिट ऑफ बीटा एक्स विल बी व्हाट?
e to the power j beta x. It will be radian. Sine of anything, cos of anything, ये जो भी क्वांटिटी होती है ये रेडियन एंगल ही होता है ना? ये सुनो चेक कर लीजिए. जी सर. ठीक. So if wavelength is equal to lambda, then phase of beta into lambda will be what? एक वेवलेंथ में कितना एंगल कवर होता है? 360. No. This will be 2 pi. Right? Now, also velocity v can be written as lambda into frequency. Frequency 1 upon time period होता है ना? Wavelength upon time period is velocity. तो wavelength into frequency भी आप कह सकते हैं क्या? Velocity it will be meter per second. Or we can also say that v is equal to lambda की वैल्यू रख दीजिए 2 pi by beta into f. Right? What is 2 pi f क्या होता है बेटा? Length. 2 pi f is omega. तो अगर हमें आपको बीटा की वैल्यू पता है, अब बीटा की वैल्यू z और y पे डिपेंड करेगी. ठीक. अगर आपको बीटा की वैल्यू पता है तो यू कैन कैलकुलेट दिस वेलोसिटी, दिस vp. This velocity v or vp is known as phase velocity of voltage और current. दोनों की वेलोसिटी सेम ही है. क्लियर है क्या? और ऊपर वाला बीटा इंटू लैम्डा ट्वाइस पाई रेडियन कैसे होगा सर? बीटा इज अ कांस्टेंट. बीटा इंटू एक्स इज रेडियन. बीटा इज फेज कांस्टेंट. एक वेवलेंथ में 2 पाई एंगल कवर होता है. Whatever constant is multiplied to convert into radian, beta into lambda will be 2 pi. वेवलेंथ का यूनिट नहीं लिखे यहाँ पे मीटर. इसका वेवलेंथ का लैम्डा का हाँ, it will be meter only. वो नीचे में बीटा इंटू लैम्डा में. Beta into lambda is radian. मीटर नहीं आएगा वहाँ पे. बीटा की यूनिट मीटर इनवर्स होती है, लैम्डा की यूनिट मीटर होती है. अल्फा और बीटा दोनों की यूनिट मीटर इनवर्स होती है. एक न्यूमेरिकल करेंगे क्या? फिर से थोड़ा सा टाइम लॉस होगा लेकिन ठीक है, कर लीजिए एक और.
किसी भी बहाने से आपको याद हो जाए, यानी आप फॉर्मूला याद होना चाहिए। 275 किलोवोल्ट overhead transmission line has following characteristics. Z is equal to 12.5 plus J66 ohm. Y is equal to 4.4 into 10 to the power minus 4 angle 90 degree Siemens. Calculate the ABCD parameters. And surge impedance of line. ये तो खैर वेलोसिटी नहीं निकल पाएगा इसमें, डेटा सफिशिएंट नहीं, लेंथ चाहिए उसके लिए। ठीक है, वाई का यूनिट क्या लिया है बोला? सीमेन। सीमेंस, सीमेंस ओम इनवर्स इज सीमेंस ओनली। मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, कैलकुलेटर बस चलाते जाइए। Z is equal to 12.5 plus J66 ohm. In polar form, it will be 67.17 angle 79.276 degree. Yes or no? Y is equal to 4.4 into 10 to the power minus 4 angle 90 degree. Gamma is what? वो पर मीटर या पर यूनिट लेंथ है ना? Here we have gamma L. Will be under root ZY. लिख सकते हैं कि नहीं? ये सुनो बताइए। gamma L. हाँ, अगर स्मॉल होता दैट मींस पर यूनिट लेंथ दिया होता Z और Y तो गामा निकलता, पूरे लाइन का दिया हुआ तो गामा इन 12 निकलेगा। It will be 67.17 angle 79.276 into 4.4 into 10 to the power minus 4 angle 90 degree का पावर 1/2 कर सकते हैं क्या? 67.17 into 4.44 into 10 to the power minus 4. 67.17 into 4.4 10 to the power minus 4. It is 0.0295 angle. This is 79, this is 90, this is 169.276 divided by 2. 169.276 divided by 2 is 84.63. डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, पहले पूरा ही लिखना पड़ेगा। 12 भी एंगल 169.276। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.02956 इज इक्वल टू 0.1719। इसका हाफ हो जाएगा एंगल 84.63 डिग्री। दैट मीन्स गामा एल इज इक्वल टू
इसको आप ब्रेक करेंगे रेक्टेंगुलर में, तो अल्फा की वैल्यू 0.0161 प्लस जे 0.1712. That means alpha L is equal to 0.0161 and beta L is equal to 0.1712. This is the radian. क्या निकालना है? आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. Converting to degree, beta S is L is equal to 0.1712 into 180 by 5. It's 9.8 degree. कोई दिक्कत है किसी को? एल का वैल्यू पता नहीं है ना हम लोग को अभी तक. इसको एल का वैल्यू L चाहिए ही नहीं. Now what is A? A is equal to D is equal to cos hyperbolic gamma L था क्या? Cos hyperbolic gamma L is what? This one. अब इसके बाद आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, मैं यहाँ पे इसको चेक नहीं कर सकता. So A is equal to D is equal to cos hyperbolic gamma S and B is equal to ZC sin hyperbolic gamma L, sorry. C is equal to 1 upon ZC sin hyperbolic gamma L. और क्या पूछा है? Surge impedance of line. What is surge impedance? Is lossless line. यहाँ पे तो ऑलरेडी लॉसलेस है ससेप्टेंस, यहाँ पे लॉसलेस नहीं है, इसको जीरो मानना पड़ेगा. इस 66 अपॉन जेड एस लिख सकते हैं, एट अंडर रूट एक्स एल अपॉन वाई सी अंडर रूट. इम्पिडेंस कितना है इसका? 66 अपॉन दिस इज व्हाट 4.4 into 10 to the power minus 4. 66 upon 4.4 is 15 into 10 to the power 4.
387.29 ohm. This क्लियर है क्या? सर्ज इंपेडेंस हम लोग पहले डिफाइन कर चुके थे ना? सर जी, ऊपर की तरफ मिस हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले आवाज क्लियर नहीं हो रहा बेटा। सर, थोड़ा मिस हो गया। स्क्रीनशॉट लेगा आप, थोड़ा ऊपर कर। ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। अगर सर्ज इंपेडेंस आता तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो वेलोसिटी वगैरह अभी नहीं आएगा, बहुत बाद में आएगा, वो लोड फ्लो में आएगा। सर थोड़ा सा हो ऊपर। गया सर। सर ये एलसी में सीधा रूट के अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर डाल देने से एरर आ जाता है सर, कैसे करेगा? किस मोड में है आप? कॉम्प्लेक्स मोड में थे कि कॉम्प मोड में थे? कॉम्प्लेक्स। तो फिर आपको अलग अलग करके करना पड़ेगा। हो गया सर। हम्म। वो जेडएस का वैल्यू कैसे चला, वो उतना समझ में नहीं आया सर। इम्पिडेंस को 0 पुट कर देंगे ना, रेजिस्टेंस और उसको लॉसलेस लाइन मानेंगे। जो आपका कंडक्टेंस था वो वैसे ही 0 था। वाई की वैल्यू जो है वाई सी ही है ना। दिस इज प्योर कैपेसिटेंस, एंगल 90 डिग्री, कंडक्टेंस 0 है। लॉसलेस का मतलब आर क्यू तो जीरो। हाँ, इसको 0 पुट करेंगे। आगे चले। और ये एक्सएल का मतलब ये एक्स इंडक्टेंस वाला है ना। हाँ, ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हेडिंग इज सर्च impedance loading in short form we also say SIL. आगे चले। कैसे डिफाइन करते हैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को? तो ऐसा लोड जिसपे आपका एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों इक्वल हो जाता है, सॉरी, रिएक्टिव कैपेसिटिव एंड रिएक्टिव इंडक्टिव पावर दोनों इक्वल हो जाता है। जितना रिएक्टिव पावर इंडक्टर के पास है उतना ही इंडक्टिव पावर कैपेसिटर के पास है, तो उसको आप सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कहते हैं। नेटवर्क एनालिसिस में इसी को रेजोनेंस कहते ओके। हैं। रिलेट कर पा रहे हैं? ठीक है। So how can we define surge impedance loading? The load at which the inductive and capacitive reactive volt amperes are equal and opposite is called surge impedance loading. इसको आप सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कहते हैं। तो अब क्योंकि शॉर्ट और मीडियम में तो आसान है निकालना, क्योंकि सर्किट आपको शो किया हुआ है। ठीक,
आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में तो एकदम आपको सर्किट शो नहीं किया है ना, बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा मुश्किल होता है वहां पे इसको कैलकुलेट करना। so the SIL is also known as natural loading। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये नाम ही है लेकिन बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है। important MC, also known as natural load of the line। आगे चलें। और calculating SIL, assumptions, कुछ चीजें मैं जूम कर रहा हूं। सपोज V is equal to phase voltage at receiving end, I is equal to phase current। अगेन दिया नहीं है मतलब स्टार कनेक्शन है, फेज करंट इज लाइन करंट आल्सो। L is equal to series inductance per phase, and say XL is equal to, we can say, series inductive reactance per phase, XC is equal to shunt capacitive reactance per phase, ZC is equal to, say, characteristic impedance per phase। ये भी आप क्लास में है, कल आपका क्वेश्चन था ना ये, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग कैसे रिलेट होता है। हाँ, टेकिंग वो अप्रोक्सीमेशन, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है। ये करेक्ट, यहाँ से सफिक्स दिया सी सी इसको, नॉट कैपेसिटिव, इट इज कैरेक्टरिस्टिक। नाउ कैपेसिटिव volt amperes, we call it VAR, volt amperes reactive, generated in line, कह सकते हैं it will be equal to V square by XC is equal to V square omega C per phase। ये सुनो, एंड हम लोग कहते हैं कैपेसिटर गिव्स रिएक्टिव पावर, इंडक्टर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। कैपेसिटर निकालते हैं तो उसको जे नेगेटिव आता है, एंड सिमिलरली वी कैन से इंडक्टिव रिएक्टिव volt amperes absorbed by the line will be equal to I square XL and I square omega L per phase लिख सकते हैं।
Therefore, under natural load condition, ये सब लोड पे हो रहा है, v स्क्वायर ओमेगा c इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा एल, दोनों रिएक्टिव पावर इक्वल, ये सुनो, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, so v upon I, v square by I square will be equal to L by C. Yes or no? V upon I must be equal to under root L by C. What is V? What is I? V क्या है? I क्या है? impedance, V क्या है? V रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, I रिसीविंग एंड की करंट है कि नहीं? तो V अपॉन I क्या होगा? impedance. रिसीविंग एंड का इम्पीडेंस, तो हम कहते हैं सर्ज इम्पीडेंस ZS. It will be equal to under root L. This is inductance of line. C is capacitance of line. लिख सकते हैं? अब impedance आप at बोल नहीं रहे, इसका receiving मतलब end आप under कुछ normal condition बोलेगा ना सर? नॉर्मल कंडीशन मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब यही है ना. इंडक्टेंस का रिएक्टिव पावर और कैपेसिटर का रिएक्टिव पावर अगर इक्वल हो गया तो नेट रिएक्टिव पावर जीरो सर्किट का. At load also it is zero. In transmission line also it is zero. क्योंकि यही वोल्टेज इंक्रीज होता हुआ या डिक्रीज होता हुआ जा रहा है आपको शंट ब्रांच में, और यही वोल्टेज आपका जा रहा है, करंट आपकी जा रही है सीरीज ब्रांच में. तो अगर वोल्टेज करंट का रेशियो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के रेशियो में है, तो इस रेशियो को आप क्या बोलते हैं, सर्ज इम्पीडेंस कह सकते हैं. और ये भी प्रूफ होता है कि इस रेशियो पे लाइन यूनिटी पावर फैक्टर पे रहेगी और सारे पॉइंट पे वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे. सर इसको कहीं में लिख देना चाहिए. मैं लिख रहा हूँ, उसको डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट लिखूंगा. ठीक, नोट करके लिख लीजिए. तो at this load, and this load, the voltage V and current I are in same phase at all points along the line. Clear? Next point. Under such conditions, the line is terminated in its surge impedance ZS, which is purely resistive. Third point, when a line is
terminated in its surge impedance ZS, the power delivered by it is called natural load or surge impedance load. This is the definition. Therefore, surge impedance load of a line may be defined as the power delivered by it to a purely resistive load equal to its surge impedance. क्लियर है? सर ये सेकंड सेंटेंस में वो द लाइन इज टर्मिनेटेड इन इट्स सर्च इम्पीडेंस, ये टर्मिनेटेड मतलब हम लोग लोड टर्मिनेटेड मींस लोड, और क्या? जहां पे लाइन खत्म होगी वहां लोड ही तो लगेगा। लोड के थ्रू ही टर्मिनेशन होता है। मतलब लोड साइड में प्योरली अभी आर हो जाएगा ना। सर यहाँ में हम लोग सर्च का बहुत बार वर्ड को यूज किया है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? सर्च रिलेटेड क्या है यहाँ से? सर्च वर्ड से रिलेट करना चाह रहे हैं आप? जी, नाम दिया है तो कुछ तो होगा ना रिलेट का। ये उल्टा है, सर्च होता ही नहीं है इस पॉइंट पे। सर्च मींस सडन चेंज नहीं होता है इस पॉइंट पे वोल्टेज करंट। ओके, ठीक, नाउ अब इसकी वैल्यूज होती हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यूज ऑफ SIL, जी बताइए। लॉसलेस लाइन में ना SIL आर को आप 0 लिया था ऊपर में, हाँ, तो ये L/C जो लोड का है ना वो लाइन का है। लाइन का है। ओके, लोड पे L/C के बराबर रेजिस्टेंस लगाना है। ओके सर, उसको पूरा से डायग्राम बना के आप दिखा सकिएगा। ट्रांसमिशन लाइन है, टोटल लाइन का इंडक्टेंस होगा कुछ यहाँ से यहाँ तक, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक। टोटल लाइन का कैपेसिटेंस होगा व्हाट इज अंडर रूट L/C? इट इज ओम ओनली ना। अब इसी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है आपको यहाँ पे, R मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट L/C। तो ये जो पावर लेगा इट विल बी सर्ज इंपेडेंस लोडिंग और नेचुरल लोड ऑफ दिस लाइन। नेचुरल लोड, नॉमिनल लोड, सर्ज इंपेडेंस लोड एक ही चीज है।
हो गया सर। हो गया ना? कुछ अगेन फिर याद करने वाली चीजें, we have certain values for one phase. बोल सकते हैं P1 phase is equal to VPH IPH cos phi. Also, since cos phi is equal to 1, therefore P1 phase will be equal to VPH into IPH. Yes or no? P1 phase is equal to VPH square upon ZS. लिख सकते हैं? It is watt per phase. Therefore, P3 phase will be equal to 3 times VPH square upon ZS. एक फेज का ही है तो 3 फेज का ही हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं √3 VPH होल स्क्वायर अपॉन ZS। Therefore, natural load of transmission line, it is P3 phase is equal to √3 into VPH is what? Line voltage. Yes or no? Therefore, surge impedance loading of a 3-phase transmission line is equal to kilovolt line voltage per square upon ZC megawatt. This is final formula for surge impedance loading. Now we have values to remember. अगर याद करना चाहते हैं तो सर थोड़ा सा ऊपर दिखाइए था। हो गया सर। we have values to remember. Typical surge impedance. अच्छा, typical surge impedance लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। That is C for total line, L for total line, लेंथ डिवाइड होकर कैंसिल भी हो जाती है। तो ये शेप पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ आप देखें, so since this ZS is equal to under root L by C. That means it will also be equal to this Y by small z by small y for lossless line. Therefore, surge impedance does not depend on length of line. Per unit length cancel हो जाता है. It depends only on design. And कुछ values आप लिख सकते हैं. Typical surge impedance values for different lines are, पहला
for single conductor line. L का वैल्यू, C का वैल्यू आप जानते हैं, पुट कर दीजिए, सीधे सीधे मिल जाएगा. Z नॉट इज इक्वल टू 400 ओम पर फेज. दूसरा, फॉर टू कंडक्टर बंडल्ड लाइन, Z नॉट ZS है, ZS is equal to 320 ohm per phase. For three conductor bundled line, ZS is equal to 280 ohm per phase. Next is for four conductor bundled line, ZS is equal to 260 ohm per phase. बंडलिंग ऑफ कंडक्टर आपको पता है, एक वायर की जगह ज्यादा वायर यूज करना. अगर आप ज्यादा वायर यूज करते हैं तो सर्ज इम्पीडेंस इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? डिक्रीज होने का. डिक्रीज करता है. यही एमसीक्यू है, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है. सो द नोट इज बाय इंक्रीजिंग number of conductors in bundling, the surge impedance decreases. सर्ज इम्पीडेंस डिक्रीज करता है. सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा. इंक्रीजेस. क्लियर? सो ऑल प्रॉपर्टीज विच वाज रिक्वायर्ड हम कर चुके हैं. हमने जब सब्जेक्ट शुरू किया था ये हम कर चुके हैं. जनरल नेटवर्क कांस्टेंट्स. So network constants of transmission line are written as this Vs Is AVR plus BIR CVR plus DIR and थोड़ा सा नीचे operations कीजिए ना. which can, एक सेकंड बेटा. ठीक है सर. टू पोर्ट नेटवर्क पे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं आप? सर्किट एंड ओपन. सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कास्केड कनेक्शन,
सीरीज पैरेलल, सीरीज टोटल इतने जो है कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। दिस इज completed in two port network, completed in network एनालिसिस। जिन लोग का नहीं हुआ है वेडनेसडे को होगा, कल से आपका नेटवर्क शुरू होगा जहाँ पे छूटा हुआ था। टाइमिंग आप कैसा अगर होगा? आपको थोड़ा बहुत याद हो, दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग z पैरामीटर, दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग y पैरामीटर, दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग ABCD या T पैरामीटर, दिस इज बाय H पैरामीटर and this is by G parameter. The only possibility in power system is cascade connection. इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते। Nothing कैस्केड में दोनों प्लस हो जाता है ना, माइनस इंटू हो जाता है, multiply हो जाता है। मल्टीप्लाई। This T parameter is equal to T1 into T2। ABCD मैट्रिक्स को दूसरे ABCD मैट्रिक्स में, खैर इस लेवल तक भी जाएगा नहीं। आपको ट्रांसमिशन लाइन में नेटवर्क कांस्टेंट से अगर क्वेश्चन होता है तो ABCD की वैल्यू दी हुई होती है और आपको वोल्टेज करंट निकालना होता है। सीधे चलें एग्जांपल पे। ठीक है। एक सेकेंड। एक सेकेंड थोड़ा सा। काफी है इतना। क्वेश्चन लिखिए। The following are transmission line constants. A is equal to D is equal to 0.98 angle 3 degree. B is equal to 110 angle 75 degree ohm. C equal to 0.0005 angle 88 degree Siemens. If the load at receiving end is 50 MVA at 0.8 power factor lagging, then determine the voltage, current and power factor at sending end.
ट्राई करेंगे या मैं करूं? कर दीजिए सर, टाइम बचाने के लिए। ठीक है। Calculations will be done on phase values. वोल्टेज कितना है? 132 kV लाइन, मतलब रिसीविंग एंड 132 kV है। रिसीविंग एंड वोल्टेज फेज वैल्यूज 132 डिवाइडेड बाय √3 विच इज, चलिए कैलकुलेटर चलाइए। $76.21 76.21 किलो वोल्ट। ज्यादा अच्छा रहता है सब खासा वोल्ट में, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, किलो और वो सब में टेंशन खत्म हो जाती है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, 76210 वोल्ट। So this will be reference. So VR phase is 76210 angle 0 degree. Take IPH will be what? MVA upon 3 VPH IPH. Yes or no? IPH, sorry, 3 VPH ना। MVA कितना है? 50 MVA। 50 MVA means 50 into 10 to the power 6 upon 3. What is VPH? 76210. Calculation. IRPH, receiving end current. 2186 है क्या? 218.7 ampere. नहीं, Cos phi is equal to 0.8. Means phi is equal to 36.86 degree. Therefore IRPH is nothing but 218.7 angle minus 36.86 degree. Yes or no? देखो सेंडिंग एंड, what is VS? AVR plus B IR. A का वैल्यू दिया हुआ है, A is equal to D is equal to 0.98 angle 3 degree into what is VR? 76210 angle 0 degree plus what is B? 110 angle 75 degree into what is IR? 218.7 angle minus 36.86 degree. VS is equal to is 0.98 into into ये multiplication है 0.98 into 76210 is 74685.8 angle 3 degree plus 110 into V का वैल्यू 110 ही है ना, एंगल 75 218.7 24057 angle 75 minus 36.86 is angle 38.14
चलिए ऐड करना, अभी ये मत करवाइएगा मुझसे, हो जाएगा। हो जाएगा। सर दिस इज अल्टीमेटली 95 जी। कल नेटवर्क क्लास हुआ क्या? मंडे मंडे? जी। सर कहाँ तक हो गया नेटवर्क? उसी एसी सर्किट शुरू होगा। ओह, तो अच्छा। एसी को रोक के रखा था मैंने, जरूरत पड़ेगी उसकी अभी। मंडे से होगा ना? दिस इज फेज वोल्टेज, सेंडिंग एंड फेज वोल्टेज। सिमिलरली आई एस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? सी वी आर प्लस डी आई आर। सी का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, वी आर का वैल्यू पता है, आई आर का वैल्यू पता है, ये सुनो। जैसे निकल जाएगा। मैं ये कैलकुलेशन पहले कर चुका हूँ, तो मेरे पास तो कॉपी में नोट है आपको पढ़ाने के लिए। मैं चाहूँ तो सीधा कॉपी कर दूं, बेटर रहेगा कि आप निकाल लीजिए वैल्यूज। आंसर बता इसमें देता हूँ मैं। सर आई एस विल कम आउट टू बी 196.88 एंगल -24.41। therefore phi s will be this दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे 11.346 प्लस 24.41। phi s will be equal to 35.756 डिग्री। cos phi s is equal to cos 35.75 कितना है? 0.8115 lagging। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड वोल्टेज। इसमें ना जेट ये भी जेट आंसर इन क्या बेटा? जेट इन निकालेगा तो VS पर IS कर देगा ना। जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। सर क्वेश्चन एक बार दिखाइए इधर, फोटो लेगा। ये एक टॉपिक इसमें आता है जनरल नेटवर्क कांस्टेंट्स को लेकर के, लेकिन ये सीधा सीधा नेटवर्क थ्योरम वाला ही है, उसमें कुछ अलग है नहीं, सिर्फ एसी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आपको एबीसीडी पैरामीटर दिया होगा, वीएसआईएस पूछेगा, या फिर वीएसआईएस दिया होगा, एबीसीडी पैरामीटर पूछेगा। सर इसमें सर 3 पीस में सर हमेशा सर हम ये स्टार मानते हैं ना? 3 पीस में सर हमेशा हम सर स्टार मानते हैं ना, जो से भी हो। हाँ स्टार मानते हैं, नहीं तो गिवन होना पड़ेगा। गिवन नहीं है तो स्टार ही मानते हैं, और गिवन होता भी नहीं क्योंकि लाइनें स्टार में ही चलती हैं। हाई वोल्टेज ना तो। हाँ सर ये जो माइनस लाइन सर ये माइनस रेडियन को पॉजिटिव में लाने का कुछ है क्या उपाय ना, इसे हो जाता है? उपाय का वाला बात नहीं है। देखिए ये जो है ना वोल्टेज, रेफरेंस से 11 डिग्री आगे है, करंट जो है ना रेफरेंस से 24 डिग्री पीछे है, तो इसमें कितना गैप होगा वीएस और आईएस में, फेज डिफरेंस? बीएस और आईएस में इसको सम करना पड़ेगा।
कितना हाँ, सम कर दिया, हो गया। लैगिंग लीडिंग पता ही है आपको। सर तो सर डिग्री में है ना, मेरिडियन का बात कर रहे हैं। डिग्री में ही तो है सब। कहाँ कहाँ से आपको रेडियन कभी लिया ही नहीं। नहीं सर, हम ऐसे बोल इवन रहे हैं क्वेश्चन भी हाँ। तो सर हम बहुत मतलब ऐसे बोल के देख रहे हैं अगर माइनस रेडियन में ऐसे उसको सर कोई टीम में कन्वर्ट करना बेटर है क्या ना? रेडियन में बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप। रेडियन में अगर वैल्यूज होती हैं तो इन टर्म्स ऑफ पाई होती हैं। जी सर सर हो जाएगा। तो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है ना। जी सर मिनिमम 3.14 रेडियन कितना होता है। देखना पड़ेगा भाई, रेडियन 180 है, कितना 180 180 का? डिग्री। हाँ 31.4 रेडियन कितना होता है। इंटू करना पड़ेगा। 1800 डिग्री। और ये कितना होता है, इमेजिन कर पाएंगे आप। 360 का साइकिल घुमाते रहिए। तो जब आप वैल्यूज के टर्म्स में जाते हैं ना, तो आप डिग्री को ही यूज करते हैं। रेडियन जैसी यूनिट, हालांकि ऐसा यूनिट रेडियन ही है, लेकिन यूज लिमिटेड है उसका। जी सर तो गिवन ना होने से भी उसको आप डिग्री ही मानते हैं, एंगल को। ये लाइन का स्टार होना है ना डेल्टा होना है, इसको नहीं पढ़ा है ना सर, हम लोग कौन डिसाइड करेंगे। स्टार ही होगा हमेशा। सेंडिंग एंड ट्रांसमिशन लाइन, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है। और ट्रांसफार्मर स्टेप अप हुआ, स्टार हुआ। डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार। तो लाइन पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो स्टार कनेक्शन से ही मिल रहा है। ये डेल्टा कभी होगा ही नहीं। सर लेकिन ये सर मतलब उसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो डेल्टा यूज होगा ना? दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर ही शुरू नहीं हुआ अभी। नहीं सर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का, यही तो ट्रांसमिशन का बात है, लेकिन नहीं सर नहीं वही। नहीं नहीं, इंटायरली डिफरेंट है। कंस्ट्रक्शन अप्रोच, सोचने समझने का तरीका, कैलकुलेशन, फॉर्मूला बनाने का तरीका सब अलग है वहाँ। अगर सर क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन सर मतलब सेकंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करने से सेकेंडरी का नहीं बोल के, वो उसको नहीं बोल के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलने से तो सर उसमें डेल्टा यूज करना पड़ेगा होगा। अब मुझे लगभग आइडिया है क्वेश्चन का, लेकिन मैं इस वक्त बता नहीं सकता आपको। ओके नहीं सर, लेकिन ये आपने ट्रांसमिशन का। डिस्ट्रीब्यूशन में एबीसीडी पैरामीटर्स पढ़े हैं। सर एबीसीडी पैरामीटर्स तो नेट में पढ़ा है तो। डिस्ट्रीब्यूशन में पावर सिस्टम इज डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज ना। जी सर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन। हाँ सर एबीसीडी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। डिस्ट्रीब्यूशन में कभी एबीसीडी पैरामीटर देखा है आपने। सर उसमें था क्या, वेब में? नहीं होता है। अच्छा वो वेब का उसमें शायद था एबीसीडी का, ट्रैवलिंग वे बोला। इसमें वो ट्रैवलिंग वे बोला ना, ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ से ट्रेवलिंग वेव। हाँ ट्रेवलिंग वेव अच्छा लाइन ट्रांसमिशन लाइन में होता है, वो भी सिर्फ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, और कहीं नहीं होता है। जी सर ठीक है सर, आप नए टॉपिक शुरू कीजिए। नया टॉपिक कल शुरू होगा। आज इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास होगी। कल मैं थोड़ा ज़्यादा लूंगा क्लास। कल शायद अश्विनी सर नहीं लेंगे, तो मैं 2-3-4 घंटा कुछ लूंगा ऐसा। जी सर सर ठीक है जी। सर आपका नोट्स को सर ये टॉपिक वाइज होकर के शेयर कर दीजिए ना सर, बाद में पीडीएफ फॉर्म में। सर बहुत देर तक मोबाइल देखने से आँख पूरा दर्द हो जाता है ना। वही काम आप भी कर सकते हैं बेटा, वो आप वीडियो चला सकते हैं ना। वीडियो को नहीं भी सर, आप स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना लो। सर आई मीन ये आपका जो जो सर नोट है ना,
उसको उसको स्कैन करके पीडीएफ में देने से हम लोग अपना उसका हिसाब से नोट भी, आपका वीडियो भी देख हैंड लेगा रिटन, और हाँ। हैंड रिटन नोट्स, नहीं सर, आपका कुछ ये आप पहले बोल रहा ये था ना वाला। आपका, हाँ नोट बना के आप जो रखा है बोल के सर। वो नहीं समझ में आएगा बेटा आपको। आपका वो सर खुद अगर पढ़ने हैंड के लिए रिटन, बना, खुद पढ़ने के लिए बनाते हैं। क्योंकि सर अभी इतना ये मैं थोड़ा सबको एक साथ, हम भी स्टार्टिंग से वो नहीं किया तो पूरा वीडियो को एक पूरा देखने के लिए बहुत समय लग जाता है ना, और आग भी पूरा बहुत देर तक देखने से थोड़ा दर्द हो जाता है, प्रॉब्लम। हम्म, इसको मैं आपका पीडीएफ भेज सकता हूँ, ये जो पढ़ाया है इसको भेज सकता हूँ। प्रिंट आउट तो सर हम लोग अपना से ले लेगा। बाकी लोग जैसे सर कुछ ये होने से वो लोग नोट को दे देता है, तो ये स्टूडेंट अपना से प्रिंट आउट कर लेता है। ठीक है, मैं देता हूँ। हाँ, होगा सर।